voltage 0 means the LC combination behaves as a short circuit, and in parallel combination that means the LC combination behaves as an open circuit. So अपना next point देखते हैं क्या है. So we have covered 10 point up to here. Now we will see the 11th point with respect to your series versus parallel resonance. तो देखते हैं क्या है. So 11th point देखते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड क्या होगा. So up to here we have seen the 10th point. Now 11th point with respect to series versus parallel. ठीक है. So देखते हैं क्या आएगा. Now so Z is equals to R plus J XL minus XC. Okay. Now if you multiply by I square on both sides, then it is I square Z, then it is I square R plus J I square XL minus I square XC. ठीक है यहाँ तक. Now so it is S, it is P plus J QL minus QC. ठीक है. So but in series circuit this term is equal, then this term also equal, so QL is equals to QC. ओके, क्लियर है. सिमिलरली अगर हम यहां बात करें तो देखते हैं क्या आएगा. Y equals to G plus J VC minus VL. Now multiplying on both sides B square Y, then it is V square G plus J V square BC minus V square VL. Then it is what? S P plus J QC minus QL. Now similarly here both terms are equal. That means QC is equals to QL. Okay. Now if you see the next part में अगर देखें 12th point में पावर ट्राइंगल देखते हैं. क्या देखते हैं? पावर ट्राइंगल ऑफ बोथ सीरीज वर्सेस पैरेलल रेजोनेंस. देन क्या होगा अगर आपको याद हो, दिस इज द P, the real part is P, then QL is equals to QC, QL is equals to QC, then P S equals to P, S is equals to P. Similarly यहाँ पर QC equals to QL है, then S equals to what? P, P equals to S. So your power factor is what? Power factor is what? Reactive power to the apparent power. So it is 1. Similarly here also the power factor is what? P by mod S. So it is 1. So in parallel and series resonance, the inductive or reactive energy stored are equal. Due to that the power factor is 1. Okay. Now next point, if you want to see the 13th point, the phasor diagram of the सीरीज वर्सेस पैरेलल रेजोनेंस. देखते हैं क्या होगा. सो द फेजर डायग्राम ऑफ द पैरेलल वर्सेस सीरीज रेजोनेंस. 14 पॉइंट देखते हैं क्या होगा. फेजर डायग्राम. ठीक है यहां तक. ना इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम, सो इट इज ऑन रेफरेंस. ओके. In series circuit current is on reference because in series circuit the current is same. Now the resistive voltage is in phase with the current, so it is VR. Okay, but in series resonance XL is equals to XC, so IXL is equals to IXC, so I square XL is equals to I square XC, so it is VL equals to VC. From this QL is equals to QC. ये बात समझ में आ रही है. तो अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो होगा क्या. फॉर द इंडक्टर करंट लेग्स, फॉर द इंडक्टर करंट लेग्स, सो इट इज VL, एंड फॉर द कैपेसिटर करंट लीड. ओके, बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. Okay, so your circuit is completely resistive. As series resonance, your circuit is completely resistive. So if you draw the same diagram
For the parallel resonance, then we will have 14 point in here. In parallel circuit, the reference quantity is voltage. Okay. Now for the resistance, the current is in phase. The current is in phase. Now for the capacitor, current leads, and for the inductor, current lags. Okay. So current lead, it is your IC. Similarly, this is your current IL. But in case of parallel resonance, both are same. So this is equal and opposite. क्लियर है बात यहाँ तक? सो ये यहाँ तक अभी तक हमने 14 पॉइंट कवर कर लिए हैं सीरीज वर्सेस पैरेलल रेजोनेंस. अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. 15 पॉइंट की बात करते हैं. देखिए ना 15 पॉइंट देखते हैं. Now, in 15 point, I want to discuss the Z versus frequency graph. Similarly, here I just want to discuss with admittance versus frequency graph. ठीक है यहाँ तक? So यहाँ हम देखना चाहेंगे impedance versus frequency graph और यहाँ हम देखना चाहेंगे admittance versus frequency graph. तो देखते हैं क्या आएगा. It is frequency, it is Z. ठीक है यहाँ तक. So now we just divide the frequency into two zones. It is resonant frequency, and this is the region where the frequency is less than the resonant frequency, and this is the region where the frequency is greater than the resonant frequency. So it is the below the resonant frequency, below resonance frequency region. And this is the region above the resonance frequency, above the resonance frequency. ठीक है यहाँ तक ना. अगर हम बात करें तो देखिए कैसे डायग्राम है ना. अगर हम बात करें एक्सएल जो है वो होता है ओमेगा एल और एक्सी जो होता है वो होता है 1/ओमेगा सी. ठीक है यहाँ तक. सो अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी की, पहले हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है. अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? लो होगी, तब एक्सएल लो होगा और फ्रीक्वेंसी लो होगी तब क्या होगा? एक्सी हाई होगा. तो अगर इस रीजन के लिए देखें, इस रीजन के लिए क्या होगा? एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल. ठीक है यहाँ तक क्लियर विजिबल है. सिमिलरली हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी में होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्सएल हाई होगा और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्सी क्या होगा? लो होगा. तो इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां क्या होगा? एक्सी इज लेस देन एक्सएल. ठीक है. तो अगर इसकी बात करें तो ये रीजन होगा कैपेसिटिव रीजन. कौन सा रीजन होगा? कैपेसिटिव रीजन. ठीक है यहाँ तक. इस रीजन की अगर हम बात करें तो ये रीजन कौन सा होगा? ये होगा इंडक्टिव रीजन. ठीक है यहाँ तक ना. सो इंडक्टिव रीजन होगा. अब अगर हम बात करें इस पॉइंट की अगर बात करें एट एफ इज इक्वल टू एफ नॉट एंड एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो जेड बराबर सिर्फ क्या होगा? आर होगा. ये होगा प्योरली रजिस्टिव रीजन. प्योरली रजिस्टिव रीजन. ये बात क्लियर है सबको? ठीक है यहाँ तक ना. अब अगर हम बात करें एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ की देखें तो ये तो लीनियर ग्राफ होता है. देखिए ये कैसा ग्राफ होता है? लीनियर. अगर हम एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ की देखें तो ये हो गया एक्सी इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट. तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया. इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए. और अगर हम एफ इक्वल टू एफ नॉट पे देखें तो जेड बराबर आर है, तो जेड बराबर आर होगा, एक कांस्टेंट ग्राफ होगा. तो अब हमें इन तीनों चीजों को क्या करना है? मिक्स करना है. तो इन तीनों चीजों को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं. जस्ट टेक द अनदर पेन दैट इज अ रेड पेन. ठीक है. सो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, then your curve is behaving as a captive region. For the captive region, this curve is like that. This curve is like that. Okay, I hope so. ये बात समझ में आ रही होगी.
This curve is like that. Now when frequency is greater than the resonance frequency, your curve is behaving like this point, so like that. Okay, and at the resonance frequency your circuit is impedance is capacitive, sorry, resistive, then your curve will look like that na. So this is the impedance versus frequency curve for the series resonance. Now this is the point where Z is minimum, and that is equals to R. होपफुली ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, क्लियर है ना। तो अब अगर हम बात करें सिमिलर पॉइंट की, अगर एडमिटेंस की हम बात करें तो देखिए क्या निकल के आता है। सो अगर हम एडमिटेंस के लिए पॉइंट कवर करें तो देखिए क्या निकल के आएगा। वी हैव टू ड्रॉ द पॉइंट y वर्सेस f, इट इज f। सो अब अगर हम y की बात करें तो पहले तो हमें रीजन देखना पड़ेगा। सिमिलरली आई एम जस्ट डिवाइडिंग सर्किट इनटू टू पार्ट्स, इट इज f is less than f naught and it is f is greater than f naught। ओके, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो अब देखिए VL जो होता है 1/XL होता है और ये हो गया 1/ωL। सिमिलरली अगर मैं VC की बात करूं तो ये हो गया 1/XC एंड इट इज ωC। सो BL जो है वो VL है 1/ω प्रोपोर्शनल है और जो VC है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है यहाँ तक। तो अब अगर देखिए लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी इस जोन के लिए बात करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो ये ज्यादा होगा, VL क्या होगा, ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी कम है तो VC कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन की बात करूं, फॉर लो फ्रीक्वेंसी रीजन आई एम मार्किंग हियर, और लो फ्रीक्वेंसी रीजन VL is greater than VC। Agree? Now, similarly apply the high frequency region. Frequency high, then BL low. Frequency high, then VC high। ठीक है, तो इस रीजन की अगर हम बात करें और दिस जोन VL is less than VC, that means it is inductive region। It is inductive region। ठीक है यहाँ तक, और ये हो गया आपका कैपेसिटिव रीजन। ठीक है यहाँ तक, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी ना। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द पॉइंट वेयर एट f is equals to f naught, then y is equals to g and y is minimum। होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। So let's draw the diagram। Now let's take one more thing। The VL is rectangular hyperbola and your VC is linear curve। This curve is linear, VC is linear। Similarly your BL and it is like that curve। This is your curve। Hopefully ये बात समझ में आ रही है, ये चीजें साइड में समझा रहा हूं मैं आपको। So अगर हम इस पॉइंट को भी ड्रॉ करें then we will have the point like that। It is VL ना, so it is like that। This is your curve। okay, so I'm just taking the same pen as we taken in the series case। so it is your, hopefully ये डायग्राम अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है यहाँ तक। so this is your inductive region। now this is your capacitive region। okay, this is your capacitive region and at f equals to f naught you are having the y min। this is your y min point। okay, this is your y minimum point। now so we have drawn the impedance curve। now if you want to draw the impedance curve in case of this point, so you just take that thing, you can take like that now। so at this point if you want to take Z also here, then it is the y minimum and this is the point, this is the point where the impedance is maximum। hopefully ये बात समझ में आ रही है।
अगर सिमिलरली अगर मैं यहां पॉइंट लूं तो देखिएगा क्या होगा, अगर मैं इधर y ले लेता हूं तो y तो मैक्सिमम होगा ना, देन यू जस्ट हैव लाइक दैट कर्व, जस्ट लाइक दैट कर्व, ओके। सो इट इज दिस पॉइंट y मैक्स। सो चेक कर लीजिए ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपके या नहीं आ रहे हैं। सो वी हैव ड्रॉन द impedance versus frequency and admittance versus frequency graph for the series as well as for the resonance series and parallel resonance, ठीक है यहाँ तक। now I want to take some more point with respect to these point, what are they, let's see। तो अगर हम यहां तक क्लियरली समझ में आ गया है तो अब दो पॉइंट और हैं इसी से रिलेटेड जो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, इन्हीं कर्व्स में, इन्हीं कर्व्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए इन्हीं कर्व्स को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, आई एम एक्सटेंडिंग टू द लोअर साइड, सिमिलरली आई एम एक्सटेंडिंग दिस टू द लोअर साइड, ओके। नाउ आई एम जस्ट ड्राइंग द फर्स्ट पॉइंट, I just take this point here, I'm just having XL is greater than XC, I'm just taking here only. Similarly here I'm taking XL is less than XC, okay na? Now I just want to save space, okay। now next point is what, I just want to draw I, the frequency versus current curve। the 16 point I just take this current versus frequency curve, okay। so let's draw the curve, this is your I and this is your frequency, this is your frequency, okay। on the just take upper side, so I just want to draw one more curve, so it is your frequency and this is your I। now क्या रिलेशन है अगर हम देखें, I जो है वो V Y Z है और Z कैसा है, मिनिमम है, तो करंट कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। नाउ जिस पॉइंट पे इंपीडेंस मिनिमम है उसी पॉइंट पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो योर कर्व इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट, ओके। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट कर्व and at this point the current is maximum, okay, clear है यहाँ तक। now similarly अगर मैं यहां ड्रॉ करूं देखिए क्या होगा, I just want to draw the same curve, it is now अगर हम सेम चीज को करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ को अगर पैरेलल रेजोनेंस के लिए ड्रॉ करें, देन I वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ अगर देखें तो देखिए क्या आएगा, ओके। सो जहां इंपीडेंस मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे करंट कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तो देखते हैं क्या आएगा। सो दिस इज योर एफ नॉट, सो कर्व इज लुक लाइक दैट बिकॉज करंट इज मिनिमम ना, if admittance is maximum, sorry, impedance is maximum, then your current should be minimum। now clear है यहाँ तक, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को। ना चेक करिए, in series circuit current is maximum, that's why called acceptor circuit, it is called acceptor circuit, I already told you this is acceptor circuit। now current is minimum, that's why it is called rejector circuit। अब क्लियर हो रहा होगा, हाई होपफुली ये चीजें, ठीक है। नाउ वन मोर कर्व आई जस्ट वांट टू ड्रॉ विद दीज थिंग। नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ द एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, सो आई जस्ट वांट टू इन 17 पॉइंट आई एम ड्राइंग एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन द 17 पॉइंट, ओके। सो लेट्स ड्रॉ। नाउ अगर हम देखें अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी अगर कम है देन हियर वी आर हैविंग व्हाट रीजन, लेट्स चेक, आई थिंक इट इज वी टेकन रॉन्ग हियर, ओके, हियर इट इज करेक्ट बिकॉज हियर इज कैपेसिटिव। लेट्स चेक, डोंट वरी, योर एक्सेल
omega xc 1 upon omega, so it is less, so more, so it is captive region, it is captive region ना, xc greater than xl, ठीक है। और अगर इधर हम बात करें तो ये था इंडक्टिव रीजन यहां पर, ठीक है यहाँ तक ना। सो अबाउट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू ड्रॉ द एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द सीरीज रेजोनेंस। नाउ अगर हम देखें बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो लेफ्ट पार्ट है इस सेंटर पॉइंट के अराउंड, इट इज एफ नॉट, इट इज ऑल्सो एफ नॉट, ओके। सो अगर हम इस लेफ्ट पॉइंट की बताएंगे, ये जो रीजन है ये कैपेसिटिव रीजन है, और ये जो रीजन है ये इंडक्टिव रीजन है, और ये वाला पॉइंट जो है वो है रेजिस्टिव रीजन। अब अगर आपको पता इन प्योरली अगर इंडक्टिव सर्किट होगा, वो कैपेसिटिव सर्किट होगा, देन योर एंगल इज लीडिंग, माइनस में होंगे, और सॉरी एंगल जो होंगे वो प्लस में होंगे, और अगर कैपेसिटिव इंडक्टिव रीजन होगा तो एंगल क्या में होंगे, निगेटिव में होंगे, ठीक है। सो करंट में अगर एंगल की बात करें तो करंट में एंगल प्लस, और करंट में एंगल की बात करें कैपेसिटिव रीजन में एंगल नेगेटिव होगा, और इंडक्टिव रीजन में एंगल किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। सो जस्ट ड्रॉ दिस थिंग, सो लेट्स ड्रॉ, दिस इज योर, now this is your minus 90, approx minus 90, not exact, it is plus 90, and this is your, the phi is 0 point because at resonance circuit is resistive, so angle between the voltage and current is 0, क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को पैरेलल रेजोनेंस में ड्रॉ करूं तो देखिए उल्टा बनेगा, यहाँ जो सर्किट है वो इंडक्टिव है, यहाँ सर्किट कैसा है, इंडक्टिव, और यहाँ सर्किट कैपेसिटिव है। तो अगर सेम पॉइंट को देखिए मैं डिस्कस करता हूं इंडक्टिव वर्सेस कैपेसिटिव, तो देखिए क्या आएगा। सो इट इज फाई, सॉरी एफ, एंड दिस इज योर आई पॉइंट, क्लियर है। सो अगर हम यहां ड्रॉ करते हैं देन योर कर्व विल लुक लाइक दैट। सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गोज टू हियर and just to here, okay। So this is plus 90 and this is your minus 90. So these are the curves related to series and parallel resonance, impedance, admittance versus frequency curve, current versus frequency curve, angle versus frequency curve। Now next point अगर मैं आपको बताना चाहूं तो क्या होता है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज नोन एज द बैंडविड्थ कर्व, आइदर फॉर द सीरीज रेजोनेंस एंड फॉर द पैरेलल रेजोनेंस। ये ध्यान रखिए क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में मैं डायरेक्ट ले लूंगा ये चीज, क्योंकि जो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस कर्व। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो हमने अभी तक 17 पॉइंट कवर कर लिए हैं, अब हम 18वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में नेक्स्ट क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 18वें पॉइंट की तरफ। तो इसको इरेज कर लेते हैं। सो लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, 18वां पॉइंट, देखते हैं क्या होता है सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड। सो 18 पॉइंट में हम कवर करेंगे रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व ऑफ सीरीज वर्सेस पैरेलल रेजोनेंस। सो इन 18 पॉइंट रेजोनेंस कर्व देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस कर्व। सो इट इज अ कर्व, इट इज ए कर्व drawn, it is a curve drawn between the current and frequency, ठीक है यहाँ तक। सो पहले हम सीरीज के लिए देख लेते हैं क्या होगा, देन पैरेलल। सो इट इज कर्व ड्रॉन बिटवीन द करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो अगर इसकी बात की जाए तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई
और ये होगी आपकी करंट, ठीक है, करंट। तो अगर करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें तो हम तो ड्रॉ कर चुके थे, कैसा बनता है, इट इज जस्ट लाइक दैट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैंने एक चीज अभी नहीं बताई है, अगर क्वालिटी फैक्टर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, देन इज दिस कर्व is approximately equal to approximately symmetrical about f naught। मीनिंग क्या, अगर क्वालिटी फैक्टर 10 से ज्यादा बड़ा है तो ये जो कर्व है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज योर f naught। Now, if you see at the series resonance, your current is maximum. Your current was maximum. So it is I, and it is I max. I max. Okay. Hopefully ये बात समझ में आ रही होगी। Now, अब कुछ चीजें हम और डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होती हैं। Now, I'm taking this point, also this point. Now, it is called F1, it is called F2. Now it is omega naught, then it is called omega 2, and it is called omega 1. Clear है? So the frequency at which the current falls 1 upon root 2 times of their maximum value are called the lower half and the upper half frequency. तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर हमारी करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स गिर जाती है, फॉल कर जाती है, उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट। सो ये फ्रीक्वेंसी देखिए, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और इसको मैं अगर आरएमएस मान लूं तो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स यहीं पर तो फॉल हो रही है और इसी को बोलेंगे 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम। तो डेफिनेशन समझिएगा, the frequency at which current falls 1 upon root 2 times of their maximum values are called lower half and upper half power frequency। तो यही है हमारी lower half और upper half power frequency, ठीक है। यहाँ तक तो ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन हो गई, बैंडविड्थ कर्व की डेफिनेशन हो गई। अब बैंडविड्थ से रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन तो लंबा पार्ट है और वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इनसे कंक्लूजन। तो अगर यहां से देखें, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, so it is omega 2 minus omega 1, omega 2 minus omega 1। now for the RL circuit the bandwidth is R by L, bandwidth is R by L। now if you see it is 1 by L upon R, and L by R is the time constant of RL circuit, so it is also written as this। so ये तो हो गई आपकी बैंडविड्थ, and bandwidth is defined as the range of or the difference of upper half and lower half power frequency। similarly अगर मैं bandwidth को दूसरी तरीके से डिफाइन करूं, bandwidth equals to f2 minus f1, that is equals to 2 पाई से इसे डिवाइड कर दें, then r upon 2 पाई l। तो ये होगी हर्ट्ज में और ये किस में होगी, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। यहां तक बात। सो ये तो बैंडविड्थ से रिलेटेड पॉइंट हो गए आपके, ठीक है, जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ अब अगर हम अगला पॉइंट बात करें, सो दिस इज द पावर। अब हमें एक पॉइंट और प्रूव करना है, पावर एट रेजोनेंस, दिस इज द पावर एट रेजोनेंस, दिस इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंस, एंड दिस इज द लोअर हाफ पावर पॉइंट PLH। इट इज लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट एंड अपर हाफ। सो वी विल प्रूव the power at resonance is sum of lower half power plus upper half power। कैसे आता है वो देख लीजिए जरा, ठीक है। अगर हम रेजोनेंस पे पावर की बात करें तो पावर है Im स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अगर हम लोअर हाफ पे देखें तो लोअर हाफ पे करंट कितनी है, Im अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर। अपर हाफ पे भी कितनी है, इतनी ही, Im अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर। तो चेक कर लीजिए, हाफ इट इज Im स्क्वायर इंटू आर। चेक कर लीजिए, दोनों इक्वेशन बराबर आ गई। सो यहां से आपको स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। पावर एट रेजोनेंस इज
sum of the power at lower half frequency and power at upper half frequency। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये पॉइंट मैं अब इरेज कर दे रहा हूं और ये इसको मेंशन करा दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां तक अगली अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या आएगा ना। अगर मैं यहीं से देखूं लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तब देखिए क्या आएगा। ओमेगा 1 जो है, ओमेगा 1 की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 1 जो आएगा इस कर्व से देखें, ओमेगा 1 को अगर हम ओमेगा नॉट में से बैंडविड्थ का हाफ लेके घटा दें, द लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी इज दिस। नाउ अपर हाफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट प्लस बैंडविड्थ बाई 2। बट दीज फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड व्हेन योर क्वालिटी फैक्टर इज greater than or equals to 10, ठीक है यहां तक। सो दीज आर द सम पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर रेजोनेंस कर्व, बैंडविड्थ एंड ऑल द थिंग्स, ओके। और अगर कुछ रह गया हो तो हम देख लेते हैं। आई होप सो ये सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई है, देखिएगा कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने। एट ओमेगा 1 द इंपीडेंस इज √2 एंगल -45 डिग्री। At omega 2, because these are lengthy proof that is not required in syllabus, just your conclusion can be right, okay। So at omega 2 it is √2 angle plus 45 degree। So at f1 the circuit impedance is capacitive, it is capacitive here the impedance is इंडक्टिव, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एट ओमेगा 1 योर सर्किट इज कैपेसिटिव, सो पावर फैक्टर इज 1/√2 दैट इज 0.707 लीडिंग। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं जितना भी रेजोनेंस कर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज छूटे ना, क्योंकि डेरिवेशन जो है इतना लेंथी आपसे नहीं पूछा जा सकता है। फाइनली हमें जो है कंक्लूजन ही याद करने हैं इसके, ठीक है ना। अगर यहां से बात करें तो यहां पर अगर जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1/√2 या 0.707 लैगिंग। सो ये कुछ पॉइंट हैं रिलेटेड टू योर रेजोनेंस कर्व और बैंडविड्थ कर्व, बैंडविड्थ कर्व, ठीक है यहां तक। सिमिलरली अगर मैं अब बात करूं आपके पैरेलल रेजोनेंस की, क्योंकि देखिए 18वां पॉइंट था, 18वां पॉइंट से हमने काफी कुछ सीख लिया। अगर मैं 18 पॉइंट की बात करूं पैरेलल रेजोनेंस कर्व की, तो देखिए क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं पैरेलल रेजोनेंस के लिए बैंडविड्थ कर्व क्या होगा। सो इट इज एफ एंड इट इज आई। नाउ if you see at the series resonance current is maximum, but at the parallel resonance current is minimum, so your current is minimum. Now if you see this curve again, so again this curve is when quality factor is greater than or equals to 10. Now at the parallel resonance your current is minimum, so it is minimum, okay। Now the frequency at which in series case the current falls by the 1/√2, but here the story is different, it is √2 times of minimum value का √2 times increase हो जाए, that frequency are known as lower half and upper half frequency, ठीक है यहां तक। सो ये ओमेगा 2 हो गया। नाउ सेम डेफिनेशन होगी, बैंडविड्थ की भी डेफिनेशन सेम होगी। बैंडविड्थ इज व्हाट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बट देयर इज अ डिफरेंस इन फार्मूला। फॉर द सीरीज सर्किट द बैंडविड्थ इज 1R/L, बट फॉर द RC सर्किट द बैंडविड्थ इज 1/RC, इट इज 1/RC। तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बताने की जिससे आपको समझ में आ जाए। It is 1/tau. Now for the RC series circuit, the time constant is RC. Okay. Now this is the point. Now if you see the bandwidth in terms of, it is radian per second. It is in radian per second. अब अगर bandwidth आपको जो चाहिए वो hertz में चाहिए, it is f2 minus f1, that is equals to what, 1/2 pi RC, ठीक है यहां तक। तो ये हो गई आपकी hertz में, ये बात क्लियर है।
और अगर देख लें सेम कहानी जो होगी वो भी होगी पावर एट लोअर हाफ एंड अपर, द सम ऑफ पावर एट लोअर हाफ एंड अपर हाफ इज इक्वल टू द रेजोनेंस पावर।